Assalamu alaikum everyone. So today we will be talking about organic chemistry. And I know that this is a topic that many of you have asked to go over. So hopefully all your issues will be resolved. Don't mind the dogs. My neighbor's dogs are really agitated. I don't know why. My dogs are really gentle. Anyways, so we have 1 hour and a lot to do. So let's start. All right. So the first thing that we need to know. Hi. Yeah. Oh, and Eid Mubarak, everybody. Before I forget. Yeah. All right. So the first thing you need to know about organic chemistry is counting. 1, 2, 3, 4. Two main requirements of knowing this. Number one, whenever you're making structures or whenever you're counting structures, you need to know that you have H, O, C, N, and C. What does it mean? It means that hydrogen is always going to make one bond, oxygen will make two, nitrogen will make three, and carbon will make four. So whenever you have any structure and the examiner says, okay, is this structure right or is that structure right? Just make sure that whatever structure you make, these should be the number of bonds that you have. The second requirement that you need to know about this is the counting. So 1 is meth, 2 is eth, 3 is prop, 4 is but. So that's the second requirement that you need to know. And this counts the number of carbons in anything. And you need to know how to make the structure, the properties, the trends in physical properties, the isomers of the first 4 elements or first 4 members of any homologous series. So what exactly is homologous series? In fact, are there any terms that you need to know before we jump into organic chemistry? So yeah, the first time you need to know about is what is hydrocarbon. So hydrocarbon is anything that has just hydrogen and carbon only. So hydrogen and carbon only, that is what hydrocarbon is. And throughout this lecture, I'm going to use the term HC to represent what hydrocarbon is. Okay, so HC means that you have a hydrocarbon. It could be any of them. We know that there are alkanes, alkenes, alkynes. We don't need to know much detail about alkynes, but we need to know that they exist. So hydrocarbons, that's there. Then we have isomers. So isomer is something that you need to know about, that isomers are compounds. So first of all, they're compounds, different compounds that have the same molecular formula. They have the same molecular formula. What does that mean? That means they have the same mass. They have the same MR. They have the same number of carbon or hydrogen or oxygen or nitrogen, whatever they have the same number of those things. Then what's different? The only thing that's different about them is their structure. And that means their properties are different. Their chemical properties are different. Their physical properties are different. Their melting points are different. Their boiling point is different. Their density, volatility, the way they react, everything basically is different about them, except for their their MR, their ratio of carbon or their empirical formula will be the same. So that is the difference. So let's make a list. So same things and different things. So you have the same MR, you have the same molecular formula, you have the same empirical formula. All of this is the same. What do you have of them that is different? First of all, you have the structure that is different. Once you have the structure that is different, that means you have different chemical properties and different physical properties. When I say chemical properties, I mean their reactions. And when I say physical properties, I mean their melting point, boiling point, all those sorts of things. Okay. So that is these compounds, isomers. Before you get to isomers, you need to know that you should be able to make isomers of first 4 hydrocarbons of anything. And I will assign a few good minutes to making isomers. And I will tell you a really good technique of making these isomers if you need to. Hello, guys. Hello on the YouTube. Hello, people on Instagram. So thank you for joining. Somebody's asking for a link, so I'll just share the link with them.
Okay, just give me a minute. Yeah. So here we are on Instagram as well. So yeah, so as I was saying, isomers have same MR, same molecular formula, same empirical formula, but they have different structure, their chemical properties, their physical properties, everything is different. So just go on to YouTube, you guys, and you will see whatever we are showing over there. All right, so moving on. The second thing, the third thing that you need to know, the term that you need to know is homologous series. And that is something that they ask you about. So what exactly is a homologous series? Okay, so homologous series is basically, yeah, there you go. I think this is better. Yeah, so homologous series is basically group of compounds that have the same chemical properties or similar chemical properties. They have trends in physical properties. And most importantly, what they have is that they have same general formula. So same general formula. So in MCQs, they can ask you, acha, isme kya kya different hai, isme kya kya same hai. So you can just pick all of that from there. So same general formula, they have same or similar chemical properties, and they have trends in physical properties. अब trends depend किस बात पर करते हैं? मतलब अगर मैं कहता हूँ कि melting point इस चीज का ज्यादा है. So remember, the longer the chain, higher the melting point, higher the boiling point. So एक तो ये बात होगी. Secondly, the more branches you have, lower the melting point. So इसका मतलब ये हुआ, अगर चेन बड़ी होती जाएगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. अगर चेन में कुछ ब्रांचेस आ जाएंगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसकी वजह से. All right, so that is important. Somebody is asking for the link again. So okay, so that is it. Let's move on. We need to know what homologous series are. So there are 3 homologous series, in fact 4 homologous series that are in your syllabus that you need to know about. Okay, what are those homologous series? The first one, as I said, is a group from hydrocarbons. So that is hydrocarbon, and then you have alkane and you have alkene. Okay, so those are the 2 that you need to know about. There's another one, alkyne, लेकिन उसकी ज़्यादा detail नहीं आएगी. So let's just get that out. Alkyne में आपको क्या बताना चाहिए? The first thing you need to know is that alkyne has triple bond of carbon in there. So there has to be at least 1 carbon-carbon triple bond. And the second thing you need to know about is that the first member there, C2H2, जिसका नाम ethyne है, जिसको हम acetylene भी बोलते हैं, that name you don't need to remember. But ethyne is the name, and that thing is used in welding. So that's the fuel you use when you're doing the welding reaction, because this is going to be a very exothermic process when it burns. So that is why we use ethyne as fuel over there. So that's the only thing you need to know about alkynes. This whole portion that you have the first member, ethyne, and that is used in welding and as fuel. अब alkane or alkyne में आ जाते हैं. The first difference that we have is that alkane has only carbon-carbon single bonds, and alkene has at least 1 carbon-carbon double bond. ये चीज जरूरी है because you can have more than 1 carbon-carbon double bond, but that does not mean कि वो alkene नहीं रहता. The moment you get 1 double bond, that thing is alkene, regardless of अब उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते. At least 1 आपको चाहिए. If you don't have any double bond, then you don't have an alkene, you will have alkane. The term that is associated with these things is saturation.
So saturation का मतलब क्या होता है? Saturation का मतलब ये होता है that you cannot add more things. So saturation means that addition isn't possible. Okay, so addition isn't possible. What does that mean? That means that when we started this lesson, I told you that HONC, you have hydrogen making 1, oxygen making 2, nitrogen making 3, carbon making 4. यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन पे फोकस कर रहे हैं. कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, श्योर, बट वो 4 की 4 बॉन्ड्स किसी एक चीज से नहीं बनती. 2 के साथ बन सकती हैं, 3 के साथ बन सकती हैं, 4 के साथ बन सकती हैं. The moment carbon makes 4 bonds with 4 different things, it is saturated. दोबारा सुन लें. The moment carbon makes 4 different bonds with 4 different things, it is saturated. उसने 4 bonds बनानी है. For any compound, it's going to make 4 bonds. ऐसा नहीं हो सकता किसी bond, किसी compound में इसकी 2 हो. नहीं. The only exception is graphite, which is not a compound. It's an element, and that is where it exists in bonds, 3 bonds, and fourth electron is free. बाकी सब compounds में, सब चीजों में, diamond हो या कोई hydrocarbon हो या कोई compound हो, carbon is going to make 4 different bonds, and if they're all different, then it is saturated. अगर उनमें से 2 किसी एक के साथ हैं, बाकी किसी और के साथ हैं, या 3 किसी एक के साथ हैं, बाकी किसी और के साथ हैं, then that thing is not saturated. It is unsaturated. ठीक है? And when you have unsaturated things, you can do addition. ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखें. Saturation क्या है? When you have 4 different bonds of the carbon atom. All right. So coming back to alkanes and alkenes. Alkanes का general formula क्या है? The general formula is CnH2n, and then you have 2 other hydrogen. So इसका मतलब क्या हुआ? Let's look at alkene first. CnH2n, इसका मतलब क्या है? मैं इसको एक तरह से लिख सकता हूँ, CH2n. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ that first of all, this is the empirical formula of alkenes. कोई भी alkene आपको मिल जाता है, उसका empirical formula CH2 होगा. First वाले का CH2 times 2, second वाले का CH2 times 3, third वाले का CH2 times 4, and so on and so forth, because you need 2 carbons to make a double bond. तो empirical formula CH2 होता है. MCQs में वो option दे देता है कि अच्छा alkenes have CH2 as the empirical formula. तो yeah, that is true. Alkenes have CH2 as the empirical formula. अच्छा, alkanes में क्या है? Alkanes में you have CnH2n, same as alkene, लेकिन 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं. वो एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि आपने वो डबल बॉन्ड तोड़ी थी. डबल बॉन्ड तोड़ने की वजह से यू एडेड 2 न्यू हाइड्रोजन, सो वो वहां पर आ जाते हैं. व्हाट इज स्पेशल अबाउट एल्केन्स? एल्केन्स आर यूजफुल एज फ्यूल्स. पहली बात ये. सेकेंड, दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग एल्कीन्स. ठीक है? सो ये 2 इनकी यूजेस हैं जिसके लिए एल्केन्स बहुत यूजफुल है. You can either burn them. So methane, that is 96% of natural gas. That is the major constituent of natural gas. So that is alkane. And we burn it really easily. Petrol has lots of alkanes in it. Sure, it has alkenes as well, but mainly it's alkanes. Petroleum-based जितने भी fuels हैं, वो mainly alkanes होते हैं. Alkanes और alkenes में difference क्या है उनके uses में? That alkane is useful as fuel and for making alkene, and it is a source of hydrogen gas. When you break it down, you can get alkenes and you can get hydrogen gas. On the other hand, for alkenes, they are useful as feedstock. Feedstock का मतलब क्या है? Remember when we talked about fuels, we talked about naphtha, and we said that naphtha is a good feedstock. Feedstock का मतलब होता है you use that thing for a number of new processes, a number of different processes. So we can do that with alkenes. हम उनसे बहुत सारे और products बना सकते हैं. बहुत सारे compounds हैं which you don't study in O levels, but they are made from alkenes. So आपको पता होना चाहिए that it is useful as feedstock. The second thing you need to know about alkene is that they can be converted to alkanes. So as can be used to make alkanes. So that is the second thing you need to know about them, that you can add hydrogen to these things and you will get alkanes there. तो ये हमारे पास next बात होगी कि हमारे पास alkenes जो हैं, they are useful as feedstock. हम उनसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. One of which is alkane. The third thing that you need to know about is that you can also use them to make alcohols. So industrial processes जिनमें alcohol बनते हैं, that is you use
alkene to make alcohols. So that is the next important thing you need to know about. So alkenes और alkenes के uses में हमारे पास ये main differences आ गए. Next thing that you need to know is कि alkanes are saturated and alkenes are unsaturated. अब इसका टेस्ट क्या है? हाउ डू यू नो अगर आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं? अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, all organic compounds that we are going to talk about today, they're all colorless. ये कहीं पे लिख लें आप. Organic compounds that we're talking about are colorless, which means that you cannot differentiate between them based on color. फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि एक चीज सैचुरेटेड है, एक चीज अनसैचुरेटेड है? उसके लिए वी हैव ब्रोमीन वाटर. सो दिस इज आवर टेस्ट. इसका टेस्ट क्या है? ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, उसको दोनों आप नाम ले सकते हैं. ब्रोमीन वाटर क्या है? इट इज ब्राउन थिंग dissolved in water. So this is aqueous bromine. Okay. You have this unknown compound that you pass through it. Right now, this thing is brown. ठीक है. So इसका अभी कलर है brown. ठीक है जी, ये brown कलर की है और हमें वो नजर आ रहा है. अच्छा, now how do we know कि अब इसका कलर क्या? आपने एक unknown chemical इसमें ऐड किया. अगर तो brown से brown रहा है, that means no change has happened. Then this tells me that it is saturated. और अगर ब्राउन से कलरलेस हो गया है, जिसको हम कहते हैं that it decolorizes. If it does that, then it is unsaturated. So if you have a saturated compound that you pass through aqueous bromine, color will not change. But if you have an unsaturated compound, the color will change. So that means अगर आपको confirm करना है कि कोई चीज alkene है या unsaturated है, you just pass it through aqueous bromine and it changes the color. Okay, so the positive test. Remember, O levels में सारे positive test बताने हैं आपने. Positive test का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पूछूं तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये आग बुझाता है. Sure, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है, लेकिन वो तो नाइट्रोजन भी कर सकती है. So that is not a confirmed positive test for carbon dioxide. The positive test for carbon dioxide is that it passes through lime water and turns it milky, right? So that is something that is unique and very confirming of the nature of carbon dioxide. Just like over here, the confirmation that anything is unsaturated, that is that it changes the color of aqueous bromine. Okay, so that is alkanes, alkenes. How do you convert between them? Alkanes को ब्रेक डाउन कर दें क्रैकिंग के थ्रू तो एल्कीन बन जाएगा, और एल्कीन को हाइड्रोजनेशन कर दें, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, सो दैट मेक्स एल्केन. अब इस प्रोसेस का एक खास नाम है और एक खास एप्लीकेशन है. सो देयर इज दिस प्रोडक्ट दैट वी मेक थ्रू दिस. वी टेक वेजिटेबल ऑयल व्हिच इज अनसैचुरेटेड and we convert it to margarine which is saturated through this. Vegetable oil is liquid, margarine is solid. क्यों solid होगा? मैंने आपको अभी बताया. The more atoms you have, the higher the melting point here. So जब वो alkane बन जाता है, it has more hydrogen in there. The double bonds are gone, which means that it has a higher melting point. इसके ऊपर भी MCQs में पूछता है कि अच्छा alkenes after hydrogenation have a higher melting point or not. तो आप उसको confirm कर सकते हैं in MCQs that they will because they have become alkanes. तो अगर आपके पास alkene है जिसमें 4 कार्बन है और alkane है जिसमें 4 कार्बन है, you can be sure that alkane will have a higher boiling point, higher melting point compared to alkene. Okay, so ये एक चीज ध्यान रखिएगा. All right, so alkane has higher boiling point or melting point than alkene of same number of carbons. ठीक है, तो ये another point that they ask you about in MCQs. All right, so that is alkanes, alkenes, and that is how we know how we convert between them. अब मैं इनको आपके individually will go through these topics, but before we do that, let's talk about isomers, and I need you to pay attention for this. Let's make sure that everybody's here. So people on WhatsApp groups, they make sure that you guys are joined this. Just give me a minute, let me confirm.
Okay, so let's start with isomers. How do we make isomers, or इसके ऊपर question कैसे आता है? So the first thing that you need to know about is कि isomers होते क्या हैं? We have talked about they have same molecular formula but different structure. Isomers बनाते कैसे? उसके लिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास 3 कार्बन की जो चेन है ना, इसमें आइसोमर नहीं पॉसिबल. You cannot make any isomer here. So an MCQ was how many isomers of C4H10 exist? So this is a pretty simple question. क्यों? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 4 कार्बन ज्वाइन कर लिए, 4 हैं बना लिए. We need to complete their bonds. Every carbon needs to have 4 bonds right now. This one has 1, so 1, 2, 3, 4. Right now it has 1, 2, 3, 4. This one has 1, 2, 3, 4. This one has 1, 2, 3, 4. Total bonds हो गई. C4H10. I'm not writing hydrogen. अब अगर मैं आपको यहाँ पर 2-3 और बना दूं, मैं आपको ये बना देता हूँ. Is this an isomer? Or if I tell you about this thing, is this an isomer? So how will you know if this thing is an isomer or not? This is separated. This is not bonded together. Which is in Mexico. All right. So these are separate, not bonded together. All right. So how do I know if something is isomer or not? And this is a very useful technique of knowing this. You will get different structures in the exam. Take pencil. कहीं से भी एक साइड से start कर दें. From the chain, left or right, just start anywhere. And connect as many carbons as you can without lifting a pencil. So 1, 2, 3, 4. I can join 4 carbons here without lifting a pencil. Okay. 1, 2, 3, 4. I can join 4 here. So these are both not isomers. क्यों? दोनों में मैं 4 carbons को join कर सकता हूँ. So if I can join 4 carbons without lifting a pencil here, and I don't have any double bond, I don't have any different atoms, then this is isomer. Same for this one. 1, 2, 3, 4. I have joined 4. These are not isomers. So मैं isomers कैसे बनाऊं इस चीज के? How do I make isomers here? So let me go back to this thing. All right. So how do I make isomers? मुझे पता चल गया कि ये तीनों actually एक ही चीज हैं. So I'll just take these to a side. Okay. So I have this one thing that is my isomer for sure. Okay. अब इसका isomer बनाने के लिए what you need to do is take any 3 carbons जो हमारे पास 3 की चेन है और उसको आप बना दें. Okay. What are you left with? This one thing. If you put this carbon here, then you have them 4 carbon the long chain again, not an isomer. तो पहले पे डाल दें या तीसरे पे डाल दें एक ही बात है, because you're going to get the same thing back. But I can take that 1 carbon and put it here, and there you go. I have an isomer. क्यों? If I try to join them, let's suppose I start with on the left side, 1, 2, 3. I have an isomer because it has 4 carbons, but I can only join 3. Let's start with this one. If I try to join from the right side, 1, 2, 3. Again, same thing. If I try to join it from here, 1, 2, 3. Again, same thing. So this is indeed isomer because I cannot join more than 3 carbons, even though I have 4. So this is C4H10. This is C4H10. I have 2 different isomers. So how many isomers of this thing exist? 2. Let's try another example. And this time we will be a little more speedy because we understand the process. So here's the question. C4H9OH. Examiner is saying how many isomers of this compound are alcohols. Why have they specified this? Because they want us to treat OH as one thing. OH makes alcohol, so it's going to stay there. So let's start with this. I told you that you cannot have isomers in 3 carbons, but you have 4 carbons here. So let's start with this. 3 carbon लगा दिए. Okay. What do you have left right now? You have 1 carbon left and you have OH left. ये 2 चीजें हैं जिनमें आप changes कर सकते हो, जिससे आप isomer बना सकते हो. Remember this thing. After you got those 3 there and you cannot have isomers in there, then you have the 4th carbon and the OH to make isomer. So let's start with this. I take the first carbon and I put it here.
and I take the OH and I put it at the first carbon as well. So I have one isomer here. In this isomer, I can join 4 carbons and OH is on the first carbon. So मैं ये one छोटा सा लिख रहा हूँ just to show where the OH is. So OH is on the first carbon. अच्छा, I try to make another one and this time I'll make a mistake. So I have 3 of them and I think कि अच्छा 3 का तो नहीं होता, but इस time मैंने left पे लगाया था, मैं right पे लगा के देखता हूँ. So if you put it on the right side and put the OH here, then you have the same thing again, क्योंकि आपके पास right side से first carbon पर OH लगा हुआ है. So it doesn't matter which side you join from, as long as you have the same number, this is not going to be an isomer. So this is not an isomer of this thing. they दोनों एक ही चीज हैं. All right, so if I cannot make it like this, what do I do? So I told you that you have 3 carbons, उनमें isomer नहीं होंगे, और आपके पास OH है और एक और carbon है, आप उसकी position change करेंगे. So let's start with this. So I have 3 carbons again. 1, 2, 3. Now let's see. I put my carbon on the first one and my OH on the second one, and I have an isomer because I can still join 4 carbons, but OH is on the second one. So let me put that there. Now I have an isomer. This is my second isomer. Okay, let me try again. This time I'm going to have these 3 in the long chain because 3 पे तो isomer exist नहीं करता. But then what I'm going to do is I'm going to take the OH, put OH on the first carbon and carbon on the second carbon. इस वाले में मैंने क्या किया था? I put carbon on the first carbon and OH on the second one, right? So over here I'm going to take the same thing, but this time I'm going to take carbon और OH को मैंने वहां पर add कर दिया. Okay. Arisha, isomer is basically anything that has the same molecular formula but different structure. So आपके पास same number of carbon, same number of hydrogen, same number of oxygen और कोई और atom है same होंगे, but you will have different structure, different way that they are arranged. Okay. Yeah, I hope that answers your question. Yeah, so coming back to this, we cannot have isomers in 3 carbons. So let me draw this one again. So 3 carbon मैंने बना दी. And now I have the 4th carbon and the OH जिसको मैं move कर सकता हूँ. So what have we done so far? पहले हमने carbon first पे लगाया था और OH भी first पे लगा दिया था. फिर हमने carbon first पे लगाया था और OH second पे लगा दिया था. अब मैं carbon second पे लगाऊंगा और OH first पे लगा दूंगा, and that is another isomer. So OH on the first one, carbon on the second one. Don't mind the dogs, please. So we have 3 carbons here, definitely isomer because I cannot join 4 carbons like this, and now I have changed the position of carbon and OH. Now one more thing that I can do, I can take the 3 carbons again because I do not have any isomers in 3 carbons, and I have the 4th carbon and the OH that I want to put. So अभी तक मैंने क्या किया? Carbon 1, OH 1 पहले पे लगा दिया. फिर मैंने carbon first पे लगाया, OH second पे लगाया. फिर मैंने carbon second पे लगाया, OH first पे लगाया. अब मैं carbon भी second पे लगाऊंगा, OH भी second पे लगाऊंगा, and I have an isomer because OH भी second पर है, carbon भी second पर है, and I have 3 carbons that I can join. This is definitely an isomer. So this is a very useful technique that you guys can do because all you need to know is that you have 4 different carbons here and you cannot have isomer in 3. So that means आप 4th carbon को move करेंगे और OH को move करेंगे, and that is how you get different alcohols in there. Sure, अगर वो हमें ये कहता कि इनके simply isomer बनाओ, alcohol होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, then what you guys can do is that you can take the oxygen as a separate thing. So 4th carbon और oxygen, अब इसके दरमियान आप खेल सकते हैं. So you can take the oxygen. So 3 carbon है, उनको मैंने बना दिया. And then I have oxygen and carbon. So what I can do is I can take oxygen on the first carbon and then join carbon to that. अब ये भी एक और isomer बन गया. लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था, so we don't need to do that. और ये usually आपके O levels और IGCSE में नहीं आएगा. O level और IGCSE में you don't study these ethers. So इस वजह से हम alcohols पे ही stick करेंगे. All right. So does that answer? I hope that clarifies this. So how do I know isomers? Again,
How do I know something is an isomer? It must have the same formula. Notice that all of these have same formula. हर एक के अंदर 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 O है. या अगर मुझे 10 हाइड्रोजन नहीं करने तो हर एक में मैं कह सकता हूँ that I have 9 hydrogen and 1 OH in all 4 of them. And you can see that this is an isomer, but this one is not because they're the same thing. This is an isomer, this is an isomer, and this is an isomer. And that is how we are able to make these isomers. All right. So I hope that answers any confusions or something that you might have. All right. So let's move on. So that was isomers. अगली चीज जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को इशू आता है वो है nomenclature. So what is nomenclature? Nomenclature is how you name compounds. So nomenclature में हमारे पास rules क्या हैं? Good thing for O levels and IGCSE that you don't need to know how to name branches. वो आपको नहीं पूछता कि इस ब्रांच का क्या नाम है. आपको सिर्फ ये देखना है कि straight chain compounds के नाम क्या हैं. And secondly, you need to know how to identify functional groups. So functional group क्या होते हैं? They are groups of atoms that determine properties of things. So कुछ functional group जो आपके syllabus में हैं, OH is a functional group, COOH is a functional group, COO is a functional group, Cl is a functional group, या Cl के साथ कोई भी fluoride, bromide कुछ भी आ जाता है तो आपको वो उस सब को हम halide बोल देते हैं, X. Alright, so this is alcohol, this is carboxylic acid, this is ester. So alcohol जिसके नाम के साथ OL आ जाएगा. So I'm just going to write that OL. This is going to be carboxylic, so NOIC. OIC means organic acid because all acids have IC in their name. Hydrochloric, sulfuric, nitric, phosphoric. वो IC जो है वो बताता है कि वो acid है. With OIC, you know it's an organic acid. So ethanoic, propanoic, butanoic. So वो हमें बता रहा है. COO tells me that it's an ester, which means it has noate in the name. Again, this comes from the idea that it is salt. So आपको याद होगा कि salts में हम कहते हैं ये nitrate, phosphate. तो 8 का लफ्ज वहां से आ रहा है. Nitrate से 8 है, phosphate में 8 है, carbonate में 8 है. But because this is organic, it is O8. Okay, because of that thing, से ये organic salts होता है हमारे पास. These are halides, तो इनके नाम के साथ chloro, bromo, fluoro इस तरह के नाम आ जाएंगे. Okay. Next thing that you need to know about is how you name the carbons. So you just count the carbons as you can see over here. 1 carbon is meth, 2 carbons in eth, 3 is prop, 4 is but. So that is how you know what you have. All right. So now you can easily identify how you name them. So let's try to go in there. So I have this thing. And I have OH here. So what do I have? First of all, I have 4 carbons. So this is but. I have the OH, so this is butanol. But because OH is on the first carbon, this is but1-ol. या इसको मैं खाली butanol भी बोल सकता हूँ. Now, if I take this OH and put it on the second carbon, I draw the same thing again. I have 4 carbons. और यहाँ पर OH है. First of all, you have to identify that this is different from the previous one. Why? Because in the previous one, OH is on the first carbon. Here, the OH is on the second carbon. अच्छा, अब यहाँ पर some students might think कि इसको हम third भी तो बोल सकते हैं. So remember, we always prefer smaller numbers. अगर एक side से 2 बन रहा है, दूसरी side से 3 बन रहा है, तो we will prefer 2. तो हमारे पास ये OH second carbon पे आ गया. तो इसका नाम होगा but because it has 4 carbon, 2-ol because it has this OH on the second carbon. So but2-ol. अब है ये भी butanol है वो भी butanol. इसको हम 1 butanol बोल सकते हैं, इसको हम 2 butanol बोल सकते हैं. लेकिन this way isn't preferred anymore. We prefer but1-ol or but2-ol. अच्छा, अब आपसे उसने नाम पूछना नहीं है because this is not paper 2. वो आपको आइडेंटिफाई करने का बोलेगा. तो पेपर 1 में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. You just need to remember that you can identify them like this. कि अगर फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है और सेकंड पे OH लगा हुआ है तो ये डिफरेंट है. The only thing where they're going to test you in O levels or IGCSE for nomenclature in paper 1 in particular. Paper 2 में तो obviously we can go into a lot more detail कि अच्छा इसका नाम कैसे रखना है, उसका नाम कैसे रखना है. We don't need that here. In paper 1, the only thing that can test you about names is esters. तो हम esters को थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं. पहली चीज ester बनता कैसे है. एस्टर हमारे पास हमेशा एक अल्कोहल
और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। ठीक है, क्यों? इसके लिए मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल दूंगा। आपके पास न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड होता है और एक अल्कोहल होता है, सॉरी बेस होती है, एंड प्रोड्यूसेस वाटर एंड सॉल्ट, राइट? This is very similar to what you're getting here. The only crude similarity is that here you're getting water, there you're getting water. Here, one thing is providing H positive, the other is providing OH negative. But here, carboxylic acid is going to provide H positive and this is going to provide OH negative. आप OH नेगेटिव ना भी रखो इसे, आप इसको सिर्फ इस तरह से सोच लो, एक जगह से H आ रहा है और एक जगह से OH आ रहा है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि वो अल्कोहल से ही आए, ऑल्दो वो आता है अल्कोहल से ही है, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर दैट। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट लाइक दिस कि कहीं से भी H आएगा और कहीं से भी OH आएगा, इट डजंट मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम, बिकॉज नाम में कोई फर्क नहीं रखे गए। अच्छा, अब अल्कोहल बनाते हुए, सॉरी एस्टर बनाते हुए आपने देखना है कि पहले नाम अल्कोहल से आएगा, दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखें कि अल्कोहल कम फर्स्ट एंड एसिड कम्स सेकंड। अब नाम बनाते हैं। सो हाउ डू वी नो दिस? अगर हमें अल्कोहल और एसिड का पता ही नहीं, अगर एसिड और अल्कोहल का पता है फिर तो बड़ा आसान है। लेट्स सपोज वो कहते हैं ब्यूटानोल इज रिएक्टेड विद एथेनोइक एसिड। इसका नाम बताएं जी, एस्टर कौन सा बनेगा? पानी तो बन जाएगा, एस्टर कौन सा बनेगा? तो आपको मैंने बताया दैट अल्कोहल कम्स फर्स्ट। सो आपने देखते हैं कि अच्छा 4 कार्बन वाला अल्कोहल है तो ब्यूटाइल। So YL tells me it's a methyl that comes from alcohol. And then you have ethanoic, so ethanoate. Again, the 8 part tells me it's salt and O8 tells me it's organic salt. In other words, it's ester. Okay, so butyl ethanoate. Alcohol part comes first and acid part comes second. So alcohol acid, ये order ज़हन में रखिएगा. All right. Now, what if I do not know कौन से अल्कोहल और कौन से एसिड से बना? So for that, अगर वो मुझे स्ट्रक्चर दे ही देता है, अगर हमें कहते हैं कि ये हमारे पास चीज है और इसका नाम बताएं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। जहां कार्बन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली ये जो कार्बन 2 ऑक्सीजन वाला है, ड्रॉ अ लाइन देयर। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन हेयर। ठीक है, जो ये सिंगल ऑक्सीजन वाला कार्बन है, जो ये सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन जो कि 2 कार्बन से ज्वाइन हुआ है, वहां पर ड्रॉ अ लाइन। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू नेम द थिंग विद दिस थिंग फर्स्ट एंड दिस थिंग सेकंड। इसको याद करने का तरीका व्हिच आई टेल माय स्टूडेंट्स इज कि ड्रॉ द लाइन हेयर, you have oxygen with 1 bond here and you have oxygen with second bond 2 bonds here, तो पहले आपने फर्स्ट वाले को बोलना है और फिर आपने सेकंड वाले को बोलना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जरूरी ही नहीं है कि आप इस तरह से याद रखो, इट्स टोटली योर चॉइस हाउ यू वांट टू रिमेंबर दिस। सो जहां पर ऑक्सीजन की 1 बॉन्ड है पहले उसको नाम लेना है, और जहां पे ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड्स हैं बाद में उसका नाम लेना। फर्स्ट नंबर पर सिंगल बॉन्ड, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड, बात खत्म। जहां 1 बॉन्ड है वहां पे पहले आ जाएगा और जहां 2 बॉन्ड्स हैं वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, बात सिंपल सी है। नाउ हाउ डू वी नेम दिस थिंग? दिस थिंग हैज 3 कार्बन्स, so it's going to be propyl, and that thing has 2 carbons, so that is ethanoate, बात खत्म। That's how you name them. अच्छा, अब इसका आइसोमर क्या हो सकता है? You can just switch them. आप इथाइल प्रोपेनोएट बना सकते हो। ठीक है, इथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा, एस्टर के भी वो आपसे आइसोमर्स बनाने का बोल सकता है। तो एस्टर के आपने कैसे आइसोमर्स बनाने? आपने देख लिया है कि आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। सो आपके पास 5 कार्बन है। नाउ ट्राई टू स्विच। किस तरह से आप 5 कार्बन को स्विच कर सकते हो? यू कैन हैव 1 + 4 as 5, you can have 4 + 1 as 5, you can have 3 + 1 as 5 or 1 + 3 as 5। oh sorry, क्या हो गया मेरे मैथ्स को? 3 + 2 is 5 and 2 + 3 is 5, or that's it, there is no other partition of the number 5। अब आप इसको नाम कैसे रखोगे? आप ये कह लेते हो कि अच्छा COO साइड पे 1 है और अल्कोहल साइड पे 4 है, तो आप इसको बोल दो ब्यूटाइल मेथनोएट।
एक ही होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 4+1 वाला मिथाइल ब्यूटानोएट। It's totally your choice how you break it down. Similarly, this one I can call it ethyl propanoate, and this one I can call propyl ethanoate. कैसे बनाया मैंने बेसिकली ये कहा है कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O तो है ही। अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, एक साइड पे एक कार्बन है, दूसरी साइड पे 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ये ले जी आइसोमर बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दें। अच्छा, दूसरे में मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो मेरे पास एस्टर बनने के लिए जरूरी है, एक साइड पे 4 रखते हैं, दूसरी साइड पे 1 रखते हैं, तो दूसरी साइड पे 1 कार्बन रखते हैं और एक साइड पे 4 कार्बन बनाते हैं, तो मेरे पास नाम आ गया मिथाइल ब्यूटानोएट। ओके, सो एज एन एग्जांपल आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो, ट्राई मेकिंग इट फॉर this one is really easy. Try to make as many isomers as you can of this compound. I'll give you 3 minutes for this. Go on, do it. All right, so let's resume. So how do I know this? I have total of 4 carbons here. तो मैं 4 कैसे बना सकता हूँ? I can have 1+3 or 3+1 and I can have 2+2. Those are the 3 different isomers I can make. For an ester, it's really easy. That's how you break it down. तो मेरे पास अब नाम इनके किस तरह से होंगे? 1+3 का मतलब है एक साइड पे 1 कार्बन है, एक साइड पे 3 कार्बन है, तो मैं इसको बोल देता हूँ प्रोपाइल 3 की वजह से, मेथनोएट 1 की वजह से। अच्छा, इसी तरह एक साइड पे 3 है, दूसरी साइड पे 1 है, इसको मैं बोल सकता हूँ मिथाइल propanoate. Similarly, this one, because I just have 2 of them, so ethyl ethanoate. Okay, and how do I identify it? I can just say, okay, propyl methanoate है, तो सबसे पहले मैं C डबल बॉन्ड O बनाता हूँ, और मेरे पास एल्कोहल साइड पे प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन हैं, और दूसरी साइड पे मेथनोएट 1 ही कार्बन है, तो वहां पे हाइड्रोजन डाल दिया और मेरे पास बन गया। मिथाइल प्रोपेनोएट कैसे बनाऊंगा? C डबल बॉन्ड O तो बनाना ही है क्योंकि एस्टर है। मिथाइल मतलब एल्कोहल साइड पे 1 कार्बन है, और प्रोपेनोएट मींस आई हैव 3 कार्बन ऑन द अदर साइड। देयर यू गो। इथाइल एथेनोएट कैसे बनाऊंगा? आई हैव C डबल बॉन्ड O और एल्कोहल साइड पे 2 कार्बन है, सो आई पुट 2 हेयर, एंड देन एथेनोएट मींस आई हैव 2 ओवर दिस साइड, सो एक तो बना हुआ है तो एक और मैंने बना दिया, एंड दैट इज हाउ आई कैन मेक डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ esters. So esters के नाम आ गए, ester के isomers आ गए, nomenclature is done. So far we have studied how to identify hydrocarbons, how to name esters, how to name alcohols, how to identify the different names of alcohols and all that. Then what is functional group? We have talked about how to draw isomers. As I've told you कि 3 कार्बन को छोड़ के बाकी को आपने switch करना है. And then we also know how to identify isomers, straight line या bent line, but without lifting a pencil, if you can do that. और हमने differences in alkenes and alkenes देख लिए। अब आ जाते हैं organic reactions के ऊपर। हमारे पास 3 reactions हैं organic के जो रह गए। So let me draw a map for you, and this is really going to be a simple but very elegant picture of organic chemistry that we have. So we'll start with alkane. This is a hydrocarbon. And the next one is alkene. So remember, you can make alkane to alkene and you can make alkene to alkane. दोनों बनाए जा सकते हैं। कैसे बनेंगे? Alkane से alkene बनाने के लिए you need to do cracking. Cracking का मतलब क्या है? Cracking means you heat it up but without oxygen. Remember this thing, without oxygen.
and you get that. Alkene to alkane कैसे बनाते हो? Alkene to alkane के लिए you do hydrogenation, which means you simply add hydrogen there. Okay, हाइड्रोजन ऐड की, एल्कीन से एल्केन बन गया, क्रैकिंग की, एल्केन से एल्कीन बन गया, क्रैकिंग से हाइड्रोजन भी बन सकती है, एंड वी कैन डू दैट. अभी I'll do example of each of them. Next thing we can have is alcohol. So I can have alcohol that I can make from alkene. So that means if I want to make alcohol, all I need is a reaction of alkene, और वो reaction ये है कि I can add water. So अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं तो alkane बनता है, और अगर मैं पानी ऐड करूं जिसको मैं हाइड्रोलिसिस कहता हूं, then I get alcohol. This means that if I do dehydration, मैं पानी रिमूव कर दूं अल्कोहल से, तो एल्कीन बन जाएगा, जिसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड है, concentrated sulfuric acid is a good dehydrating agent. I pass alcohol through that and I can get alkene. I have a good chance of doing that. Although question नहीं आता इसके ऊपर. And alcohol makes carboxylic acid. I'm sorry about these. So you can get alcohol to carboxylic acid or back. And how do you do that? The simple reaction, oxidation. So अगर आप oxidation करते हो, then you can get that, and if you do reduction, then you can go back to being an alcohol. Question is that what are the conditions for cracking? You just need to know that you need high temperature and you do not need oxygen. That's it. The only thing you need is high temperature catalyst without oxygen. Catalyst का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, temperature की value याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? You just need to know high temperature and no catalyst, with catalyst, no oxygen. अच्छा, the last reaction that you have is esterification. और ester कैसे बनता है? You take alcohol, so that is one thing, and you take carboxylic acid, that is the second thing, and you can get ester. So that is esterification. We have studied that in detail right over here somewhere. Yeah, you get water. Now let me give you an example of each of these, ताकि हमें confirm हो जाए कि कोई भी reaction में हमें क्या ज़हन में रखना है in O levels. Paper 1 के point of view से. So if I have a random alkane, C10H22 है, बड़ा सा alkane molecule है, I want to do cracking. That means oxygen नहीं होनी चाहिए, heat होनी चाहिए, catalyst होना चाहिए. Okay, I don't need to get any oxygen because वो burn कर जाएगा. Okay, what do I do? मुझे सिर्फ ये करना है, ये ध्यान में रखिएगा, you can get alkene, you can get alkane, you can get hydrogen. 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना सकते हो, एल्केन, एल्कीन, हाइड्रोजन. ये तीनों प्रोडक्ट्स 10 कार्बन वाले होने चाहिए, टोटल मिला के 10 कार्बन बनने चाहिए, क्योंकि दैट इज वेयर टू स्टार्ट विद. सो लेट मी सी कि अच्छा मैं कहता हूं कि मुझे 4 कार्बन वाला एल्केन बनाना है. सो C4H10, व्हाट डू आई हैव लेफ्ट? 10 में से 4 चले गए, सो आई हैव 6 लेफ्ट. मैं कहता हूं अच्छा बाकी 6 का मैं बना दूंगा एल्कीन, बन गया. अच्छा मैं कहता हूं नहीं, this is too big, I want smaller molecules. So okay, so now for smaller molecules I can be like, okay, I have C3H6, I can make 2 of them. If I don't want them, I need unique product for some reason, I can get C4H10 and I can have C2H4 and C4H8. I can also be like, मुझे हाइड्रोजन निकालनी है इससे. Okay, हाइड्रोजन निकाल ली, so you're left with C10H20. आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है, C5H10 2 बना लो. So it's totally your choice what products you want, as long as the total number of carbons and hydrogen is same on both sides. And that's it. That's what cracking is. Cracking requires catalyst, cracking requires heat, cracking makes sure that it has to be anaerobic, there's no oxygen, and you can make any products, a combination of products that you want. How will you separate them? Just like we separate any fractions, fractional distillation. All right, so that is cracking. अच्छा मैं कहता हूँ कि मुझे एल्कीन से एल्कीन बना लिया मैंने. Now what can that alkene do? एल्कीन का एक ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में, दैट इज अच्छा एल्कीन का एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया. सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसिंग. तो सब्स्टिट्यूशन में ज़हन में रखिएगा, 1 एटम रिप्लेस्ड एट अ टाइम. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. एक टाइम पे एक ही एटम रिप्लेस होता है. सो आई विल टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मीथेन.
इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, कार्बन तो रिप्लेस नहीं होगा ना, वी हैव हाइड्रोजन दैट वी आर गोइंग टू रिप्लेस. सो लेट्स सपोज आई एम डूइंग दैट विद क्लोरीन. What do I need for this? I need ultraviolet light. Super important. Without ultraviolet light, cracking substitution will not occur because bond chlorine bond तोड़ने के लिए मुझे ultraviolet light चाहिए. अगर वो नहीं टूटती मैं substitution नहीं कर सकता. और मैंने आपको बताया substitution is one atom replace at a time. So कोई एक हाइड्रोजन क्लोरीन को ले लेगा और क्लोरीन की उसकी जगह ले लेगा. That's it. That's substitution. Substitution क्या है? Replacement of one hydrogen with another atom. वो क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं ब्रोमीन के साथ नहीं होगा, हो सकता है. इफ यू हैव अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाएगा. सो यू जस्ट रिप्लेस इट और आपके पास बाकी 3 हाइड्रोजन पड़े रहेंगे, इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा और HCl बन गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट जरूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास दोनों क्लोरीन बन जाएं इकट्ठे और हाइड्रोजन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता. You need to replace one hydrogen with one chlorine at a time. अगला अगर आपने हाइड्रोजन रिप्लेस करना है तो आपको दोबारा से इस चीज को पकड़ना है. You take this thing, you make a copy of this molecule, you take this thing and then you add another chlorine to it. When you add another chlorine to it with ultraviolet light, that is when a new substitution occurs. This hydrogen might go there, this chlorine might come here, and you have वन क्लोरीन जो पहले से था और एक क्लोरीन जो नया आया और HCl बनेगा. सो अगर मेरे पास 4 हाइड्रोजन है ना और मुझे चारों को रिप्लेस करना है तो मुझे 4 HCl बनाने और 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यूज होंगे. सो इसके ऊपर MCQs में पूछ लेता है, हाउ मेनी HCl मॉलिक्यूल आर मेड इफ यू आर गोइंग टू डू कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन इन C2H6. सो ऑल यू नीड टू नो इज कि इसमें 6 हाइड्रोजन है, सो 6 HCl मेड एंड 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज्ड. क्यों? क्योंकि you have 6 potential substitutions. ठीक है? So super important that you need to understand substitution. Next reaction is addition. Any questions with substitution? YouTube पे या Insta पे आप बता सकते हैं if you have any questions. Is hydration same as hydrolysis? I don't think hydration is same as hydrolysis. It depends how you use the term. अगर आप hydration का मतलब ये ले रहे हो कि addition of hydrogen, and hydrolysis is always addition of water, so they are two different things. But अगर hydration आप कह रहे हो कि hydrogenation को आप confuse नहीं कर रहे और hydration is addition of water, then they're the same thing. Usually we take hydration as addition of water and hydrogenation as addition of hydrogen. तो hydration and hydrolysis का मतलब यहाँ पर same ही होगा. तो ये ध्यान में रखिएगा that hydration and hydrolysis is addition of water and hydrogenation is addition of hydrogen. All right, so going back, you have 6 hydrogen made, substitution हो गई. Addition में क्या करते हैं? Addition reaction में, and I'm going to tell you a very important thing here, double bond broken, obviously addition में होगी. One atom added to each carbon. अगर आप ये चीज ज़हन में रख लेंगे कोई MCQ आपका इस तरह से गलत नहीं होगा. You break the double bond and you add one atom to every carbon that was involved in the bond, and there you go. That's addition. You have cracked addition. तो addition जिस मर्जी चीज की हो ऐसी होगी. So let me take the simplest example of ethene. I add H2. क्या होना चाहिए? First of all, double bond तोड़नी है. Okay, remember the idea of RCJ. So यहाँ पे आप सिर्फ RC कर रहे हो, ठीक है? You are not doing the J part because this is not polymer. Okay, remove and copy. आपने remove किया double bond को, copy किया उस molecule को. Now you broke the double bond. This carbon, that carbon, एक hydrogen इसको दे दें, एक hydrogen इसको दे दें. Let me give you another example. What if I have this thing? And I do hydrogenation with this thing. So first of all, hydrogenation में I need temperature, I need catalyst. मुझे दोनों चीजें चाहिए. Let's suppose I have that. Now I do this. So कैसे करना है? RC, remove and copy. So remove the double bond and copy this thing. बना लिया. Now where did you remove the double bond from? उन्हीं carbons पर चीज आएगी. That is super important. MCQs में वो आपको different products देगा, क्या चाहिए बन गया, वो बन गया, तीसरा बन गया. नहीं. जहां से आपने रिमूव किया वहीं पर बनेगा. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट इमेजिन यू वर डूइंग इट विद क्लोरीन.
with chlorine, if you have that, then what happens is that you break it over here. So jahan par you remove and copy, okay, the carbons that are involved in double bond, you add chlorines there. So it was this carbon, and those are the ones that get chlorine. And that's it. Let's suppose I want to do it with HCl. Quite unusual for O levels or IGCSE even. But if I do it with HCl, then that's again really simple. Remove the double bond, copy the thing, add one hydrogen to one of them, and add chlorine to the other of them. अच्छा, यहाँ पे notice कीजिएगा, you can make isomers. आप पहले पे हाइड्रोजन लगा दो, दूसरे पे क्लोरीन लगा दो, या दूसरे पे हाइड्रोजन लगा दो, पहले पे क्लोरीन लगा दो, आइसोमर्स बन गए. और आइसोमर्स बनते हैं. अच्छा, आप कहते हो मुझे वाटर ऐड करना है. सो रिमेंबर, वाटर इज नथिंग बट H and OH. So I take H, I take OH, that is water. So that's one way of looking at water, and I would suggest in organic reactions you look at it this way, that it is H and OH. So I break the double bond, so remove and copy, बना लिया मैंने, and now wherever I broke the double bond from, उन्हीं कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बना देना. अच्छा, ये आयंस नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा. ऐसा नहीं होता कि H पॉजिटिव डाल देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा. These are simply water molecules breaking down. I can have an isomer as well. क्यों? I have two potential options. मैं हाइड्रोजन सेकंड पर ऐड करूं या पहले पे ऐड करूं, आइसोमर्स बन जाएंगे. So that is hydrolysis. ठीक है. अब इसकी conditions simple सी हैं. You need high temperature and obviously you will have steam there. You also need catalyst. So for most organic reactions, you need heat and catalyst. You do not need to remember कौन सा catalyst होगा. हाँ, इस reaction में बस आपने याद रखना है. If you're in IGCSE, then remember that this is phosphoric acid. If you're not in IGCSE, then remember it's just an acid catalyst. And high temperature तो required ही है. इस reaction में भी है, पिछले में भी है, उससे पिछले में भी, सब में है. अच्छा, क्लोरीन ऐड करते हुए या ब्रोमीन ऐड करते हुए, जो हमारे पास टेस्ट फॉर सैचुरेशन होता था, अगर मेरे पास ये चीज है और मुझे इसके साथ, this is an extra bond, yeah, अगर मुझे इसके साथ ब्रोमीन ऐड करना है तो that will give me some color, and I do not need ultraviolet light here. अगर ultraviolet light होगी तो this will be damaged, ये substitution की तरफ चले जाएगा. I don't need ultraviolet light here. I need this process without ultraviolet light. So remove the double bond, okay, copy this thing, and now you have bromine here and you have bromine here, and there you go. Simple addition reaction. So addition में आपने ज़हन में रखना है, double bond is broken, one atom added to each carbon. Substitution में आपने ये ज़हन में रखना है, one atom replaced at a time. कोई भी हाइड्रोजन है एक टाइम पे एक ही रिप्लेस होगा. तो जितने हाइड्रोजन उतने टोटल HCl बनेंगे, उतने टोटल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यूज्ड होंगे. Alright, so oxidation is simple for alcohols. Alcohols में हमारे पास एक ही रिएक्शन है, वो है oxidation. So oxidation of alcohols. I'm not going into fermentation because that is simple. You can just memorize it. So oxidation is simply कि हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, इस चीज से मैंने अल्कोहल बनाना है, ठीक है. तो sorry, I have alcohol already and I want to oxidize it. So I will take KMNO4. So KMNO4 is what I need because this is oxidizing agent. KMNO4 will provide me with the required thing. अब कैसे ये oxidize होगा? The oxygen that's already there, that has to play a part. ज़हन में रखिएगा. तो this का मतलब है कि इस कार्बन पे नहीं हो सकती, इस कार्बन पे होगी ऑक्सीडेशन. Oxygen will always occur on the carbon next to oxygen. और होगी कैसे? Remove 2 hydrogen, add 1 oxygen. That is what oxidation in these compounds is. So इस कार्बन से जिसके साथ OH लगे हुई है, remove the 2 hydrogen. So दोनों हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, we removed it, and add 1 oxygen there. तो मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, and that's oxidation. ठीक है. कलर चेंज होगा, डेफिनेटली होगा. KMNO4 has purple color. After the reaction, it will be colorless. तो purple to colorless होगा. In some questions, they might mention that this is done in acidic conditions. अगर वो mention करता है, कोई बात नहीं. Sometimes they might say this is done in basic conditions. अगर वो mention करता है, तो भी कोई बात नहीं.
इन O levels और IGCSE we do not care कि ये acidic reaction है या basic reaction है. We do not care about that. AS में we will, but for now we don't need to go into that. So oxidation हो गई, esterification हो गई, addition हो गई. Last reaction that's left is combustion. And if you're too tired and if you're exhausted, which I totally understand if you are, because we have already spent an hour on this and these are pretty rigorous things, then go to bed, go back to this video tomorrow on YouTube, and then watch combustion. Because combustion analysis requires you to be fresh. But if you're with me here, let's go. Combustion. Kya hoti? Combustion is that you burn these things. You take any hydrocarbon, you take, in fact, any organic compound can be burnt. ये चीज ध्यान में रखिएगा. Some students have confusion कि acid burn नहीं हो सकता. Carboxylic acids can be burnt. Remember this thing. You can burn them and they will produce steam and carbon dioxide if it is complete combustion. अच्छा जी, अब combustion होती कैसे? So combustion is you take any organic compound. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने गाड़ियों को आग लगती देखी? कोई गाड़ी मेटल से बनी हो तो उसको इतनी जल्दी आग ना लगे, बट हमारी गाड़ियां आर मोर देन 40% मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए तो उनको आग लग जाती है. ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो तो आग नहीं लगेगी. एंड दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न. ठीक है, वी आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छे काम नहीं करोगे यू विल आल्सो बर्न, अल्लाह ना करे. Okay, so you have oxygen, there you go, organic compounds and oxygen, and what's going to happen? We are going to get carbon dioxide and steam or water. That you go. Acha, if you have incomplete combustion, ye complete combustion hai. If you have incomplete combustion, then what happens? You take the organic compound, you take the oxygen, but now you're going to get carbon monoxide and steam, or you might even get just carbon and steam. कार्बन जरूर बनेगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन तीनों में आप देखो कि वाटर बन रहा है. अच्छा, व्हाट इफ यू हैव समथिंग एल्स, लाइक इफ यू हैव क्लोरीन इन देयर. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन होता है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसमें उसको अगर हम बर्न करते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, उनको पीपल बर्न, इट विल प्रोड्यूस समथिंग मेड फ्रॉम क्लोरीन एज वेल. सो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बनेगी. But we don't need to concern ourselves with that for now. अच्छा, how do I know? And usually what they do is question दो तरह के आते हैं MCQs में. एक वो आपसे कह देते हैं कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है, बताएं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे देता है. अब इसको हम किस तरह से करेंगे? The longer route is to make any, let's suppose, let me give you an example. 20 cm cube of an alkane is burnt using exactly 130 cm cube of oxygen. What is the identity of alkane? आपको चेक करना है. So what's the first step? First step you need to know is that this is 20 cm cube and 130 cm cube of oxygen. The first 4 alkanes that you need to know about, और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, they are all gases. So volume ratio is same as mole ratio. For gases, volume ratio is same as mole ratio. इसका मतलब है अगर यहाँ पर 20 cm cube और 130 cm cube यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास मोल रेशियो क्या है? 2 to 13. 2 moles of this hydrocarbon, this alkane, requires 13 moles of oxygen. तो इसका मतलब है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, 2 moles of hydrocarbon plus 13 oxygen makes carbon dioxide and water. मैं इसको फर्दर भी कर सकता हूँ. I can also say कि 1 mole of this hydrocarbon produces 6.5 oxygen. क्यों? 13 divided by 2. लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं. I want to keep things in integers. Okay, so what do we do here? First step, हमें alkanes पता है, हमारे पास different options होंगी. Longer route is कि आप equations बनाना शुरू कर दो. आपको अच्छा CH4 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? C2H6 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा?
C3H8 है, बर्न करेगा कौन से कार्बन डाइऑक्साइड, कितने होते हैं, और C4H8 है, H10 है, सॉरी, ऑक्सीजन से बर्न करता है क्या। मैं ये सारे एल्केन्स क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्वेश्चन ने बोला एल्केन्स, क्वेश्चन बोलता है एल्कीन है मैं एल्कीन लिख देता, क्वेश्चन बोलता है एल्कोहल है मैं एल्कोहल लिख देता, क्वेश्चन बोलता है कार्बोक्सिलिक है मैं कार्बोक्सिलिक लिख देता हूँ। इट्स टोटली माय चॉइस. Okay, now what do I do next? I need to produce carbon dioxide and steam in each one of them. I'll just make a copy of that. Sorry about that. Yeah. So just copy this thing. इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेंगे, इसमें बनेंगे. What information do I have? मुझे ये पता है कि दो हाइड्रोकार्बन को 13 चाहिए. But let me see मेरी equations क्या कहती हैं. How do I balance these equations? So I have one carbon, so I will get one carbon dioxide. Two carbons, two carbon dioxide. ठीक है, जितने कार्बन है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बननी है. तो वन कार्बन से वन, टू से टू, थ्री से थ्री, फोर से फोर. ओके, मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर बनेंगे. मुझे कैसे पता है, एवरी वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन, सो आई विल जस्ट डिवाइड इट बाय 2. सो 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर बनेंगे, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर बनेंगे, 10 हाइड्रोजन तो 5 वाटर बनेंगे. What am I assuming? I am assuming that this is complete combustion. I'm not making carbon monoxide. I'm not making carbon. This is carbon dioxide. Okay. Now let's come back to oxygen. Oxygen कितनी है? ये balance है, carbon और hydrogen दोनों balance है, दोनों sides पे. All right. So how much oxygen do I need? I have 1 times 2, 2 oxygen here and 2 oxygen here. So 4 oxygen. So इस side पर 4 हैं, इस side पर 2 हैं. What is the ratio? 4 divided by 2, simple, 2. Okay, I have 3 here, I have 4 here. Okay, because 2 times 2 is 4 now. So 3 plus 4 is 7. I have 7 on the right side, 2 on the left side, 7 divided by 2. And you can write fractions. You can write decimal points. Don't worry about it. ठीक है, आप कर सकते हो. All right. Now, what about this one? I have 4 here because 1 times 4 is 4. And 2 times 3 is 6. So 4 plus 6, 10 on the right side, 2 on the left side. 10 plus 5, 10 plus 6, sorry, 10 divided by 2. Oh God. 5 oxygen मेरे पास आ गई. And then I have 5 here because 5 water, and I have 8 here. 13. Interesting. I was looking for 13. But I have 13 on the right side and 2 on the left side. So 13 divided by 2. There you go. मेरे पास आ गई बैलेंस इक्वेशन है. लेकिन मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि 2 हाइड्रोकार्बन बर्न करने हैं और मेरे पास ये 13 होना चाहिए. मैंने तो किसी को 2 हाइड्रोकार्बन से नहीं बर्न किया, मैंने तो सबको एक एक हाइड्रोकार्बन बर्न किया. तो आई डबल द होल थिंग. अच्छा, तो अगर एक के साथ 2 हैं तो 2 के साथ 4 हैं. अगर एक के साथ 7/2 हैं तो 2 के साथ एग्जैक्टली 7 होंगे, बिकॉज 7/2 टाइम्स 2. मैं डबल कर रहा हूँ इक्वेशन को बिकॉज आई नीड 2 हाइड्रोकार्बन्स. नोटिस दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 के साथ 4 एंड दिस इज 7. With this I'm going to get 2 of them will give me 10 and 2 of them will give me simply 13. There you go. So I have made my equation. This is butane. Really long method. हाँ, you might get lucky. हो सकता है वो A ऑप्शन में ही ब्यूटेन दे दे और आप उसको बनाओ और आपको आ जाए तो अच्छा ये है आंसर. अच्छा, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसकी जगह पे, लेट्स सपोज वो मुझसे कहता कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बताएंगे किस तरह बैलेंस करनी इक्वेशन. सो मेरे पास है CH3COOH and I burn it and I want to make carbon dioxide and water. Balance this equation. So सबसे पहले आपने देखना है कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेंगे. सीधा सीधा आपने पहले कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया. Then you can see how many oxygen do you have here? 4 and 2, that is 6 on the right side. उन 6 में से 2 पहले से मौजूद हैं, तो you have 4 left. So 4 divided by 2, 2. There you go. That's all. That's how you balance the equation. क्या करना है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन में से पहले एसिड वाले माइनस कर दिए और फिर उसको बैलेंस कर दिए. ओके, सो दैट इज बेसिक कंबशन एनालिसिस, जो आप सीधा सीधा रिएक्शन को इक्वेशन बना के कर सकते हैं. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट इट्स इजी एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू some mathematical
way of doing this, and this is going to be a little shorter in the exam. अभी इस पे टाइम हमें थोड़ा लग जाएगा, but एग्जाम में ही आपका बहुत टाइम बचाएगा. Again, if you're somebody who's tired, who's not fresh, or जिनको algebra से थोड़ा सा डर लगता है, don't worry, leave this method out. I'll see you in the next class. Okay? But if you still want to go ahead, या वैसे आप check करना चाहते हो, let's go over this. So here's the thing. Let's talk about general formulas, and I'll start with alkane, or alkene से करते हैं. Alkene काफी simple है. Alkene का general formula है CnH2n, and I'm going to burn this, and I'm going to get carbon dioxide and water. अच्छा आप देखिएगा, I have n carbon, so I will get n carbon dioxide. अगर मैं इसको x बोल दूं तो I will get x carbon dioxide. And I have 2n hydrogen, जिसका मतलब है मेरे पास 2n divided by 2 just n water बनेंगे. Okay, so how many oxygen do I have here? 2 times n here and 1 times n here, n. So that means I need 3n oxygen atoms. यहाँ पे मेरे पास कितने हैं ऑक्सीजन? 2. So 3n divided by 2, 1.5n oxygen मुझे चाहिए, और ये नंबर ज़हन में रख ले. फॉर एनी एल्कीन, अगर उसमें 2 कार्बन है तो मुझे 1.5 times 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए. 3. लेट मी ट्राई दिस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. C2H4 है, मैंने बर्न करना है इसको, एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस इट प्रॉपर तरीके से. आई एम जस्ट गोइंग टू बी लाइक, अच्छा 1.5 times 2 is 3. लेट मी ट्राई टू बैलेंस इट नाउ, और 3 आना चाहिए. लेट्स सी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 वाटर बनेंगे. Does this work? On this side I have 6 atoms, on this side I have 4 plus 2, 6 atoms, balanced. मुझे कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है. If I know it's alkene, I know right away कितने ऑक्सीजन चाहिए. Let's do it with alkanes, and this time it's going to be a little longer. CnH2n plus 2 plus oxygen makes carbon dioxide and water. Okay, I have n carbon, I'm going to get n carbon dioxide. I have 2n plus 2 hydrogen, divided by 2 करूंगा, n plus 1 water बनेगा. ये मैंने क्यों किया? 2n plus 2 hydrogen है, divided by 2 क्यों किया? Because every water molecule needs 2 of them. So when I do that, this is simple, taking common, I have n plus 1 left, 2 cancels 2, I have n plus 1 water. तो ये तो मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई इसकी. ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? I have 2n oxygen here and I have n plus 1 oxygen here. The total is 3n plus 1. Okay, that's how much oxygen I need, oxygen atoms. And I'm going to get 3n plus 1 over 2 oxygen here. There you go. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर आपको मुश्किल लग रहा है, लीव इट, कोई मसला नहीं है. बट एल्केन के लिए आई नो राइट अवे मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, मुझे कितने वाटर चाहिए, इस इक्वेशन को देखते साथ में बता सकता हूं. ऑलराइट, सो लेट्स सपोज, लेट्स ट्राई टू डू दैट सेम क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि 2 ऑफ द हाइड्रोकार्बन, द एल्केन, रिक्वायर्ड 13 ऑफ द ऑक्सीजन. अच्छा, तो मैं देख लेता हूं. मुझे पता है कि एक को 3n plus 1 over 2 चाहिए, तो 2 को इसका डबल चाहिए होंगे, तो 2 को इसका डबल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, वो आ गया 3n plus 1, एंड दैट शुड इक्वल 13, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि कितने, 13. So if I do that, I have 3n is equal to 13 minus 1, which is 3n is equal to 12. 12 divided by 3 is 4. 4 कार्बन वाला एल्कीन is my answer. मुझे कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है. For alkene मुझे 1.5 times n चाहिए. इसको याद करने का तरीका क्या है? आप इसको इस तरह से देख सकते हो. This is 3 by 2n for alkene, and for alkane this is 3 by 2n plus half. ठीक है. Alcohol के लिए भी I'm sure you can come up with a formula like this. For carboxylic acid you can do this, but alkene और alkane के लिए question ज्यादा आता है. So to save time you can think about this. अगर problem है छोड़ दें. You always have the larger method, the longer method.
So the shorter method is for alkene, you need 3/2 N oxygen. And for alkane, you need 3/2 N plus half oxygen molecules. And that's how you can always balance an equation. All right. So that is it for today. If you have any question about organic chemistry, feel free to ask me and I will definitely answer. Maths at LGS 55 main for a couple of years. Okay, so that is it for organic today. I will be here in case you have any questions. Feel free to ask. Thank you so much to you guys for coming in and for joining in. I know we took a little longer, but I'll see you tomorrow, inshallah. We'll solve a paper. Also, we just started the YouTube channel for advice. Make sure that you subscribe in case you want to get updates and all that. And we also have advice.official on Instagram. If you have any questions, feel free to inbox over there on YouTube or on WhatsApp group. Also, we have a free test session group on WhatsApp. Make sure that you join it. If you want to get the link for that, it is uploaded on Instagram channel. Just go to Instagram and Instagram profile, Instagram, and you can scan the link over there. We have the QR link over there. All right, so that's it for today. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz.